Hello everyone, I am Parthrajsinh Gohil. My roll number is 19BCL076. Today I am going to talk about my comprehensive project on building information modeling and project management tools for high-rise building construction, which was done under the guidance of Dr. Shobhit Chaturvedi. Here are some of the site activity which I have observed and learned during my comprehensive project. Plaster work, flooring work, tiles work, China mosaic work, dado tiles work, texture work, etc. This is the picture of Parshwa Platinum 7-story residential plus commercial building where I worked for 6 months during my comprehensive project. Now let us take a look at the 3D model which I have prepared using the AutoCAD plan given to me from the site. This is the front view, right side view, back side view, left side view. Also from the other angles, as you can see here, the retaining walls surrounding building. These are the foundation. This is the retaining wall foundation, duct, of the floors, ground floor, which has a 9 commercial shops. Here, as you can see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. First floor to 7th floor, it has the same floor plan, except for this gallery on the first floor. This is the terrace, as you can see here, and water tank above the Unti. Now let me hide some of this so we can take a look at. Let us take a look at the structural model. Let me hide everything so we can only see the structural part of this building. This is the filter tool, so we can select what we want and another is unselected. Here is the temporary hide tool. As you can see here, only the structural member remains. This is the total structural model of the building. As you can see, these are the foundation, different type of footings, different shapes and sizes. As you can see here, let me hide this floor also. As you can see here, different things. This is the ramp for the basement and ground floor here. Take a look at the beams and columns. Now let us go to the basement. This is the floor plan of the basement. 20 different shapes and size of columns. 27 type of beam which are used for the building. This is the ramp and this is the parking area, lift area, foyer. Now let us go to the ground floor. Staircase is here. These are the 9 shops which is in the front and back side is for which is used for parking. This is the back side entry and this is the underground entry. Let us go to the first floor. So this is the first floor which I have drawn. Walls are drawn using the architecture wall. It's shown here. I have put some doors, windows here, as you can see, some of furniture, sofa, table, etc. Ventilation window in WC, doors, etc. Also, wall is made of a block, so I have assigned a concrete masonry.
to the wall property and covered with white clad. Now go to second floor plan. Second to the seventh floor floor plan is same. As you can see here, this is the casework for concealation of piping which are coming from the terrace. You can make this by using component model in place casework okay करके you can see here the extrusion. You can choose whatever way you want to design and hit OK. Now go to 3D. As you can see here, the extrusion is created. Now let us go to the terrace. This is the terrace floor plan. These are the ducts for WC piping. This is the lift area, staircase. Now let us go to the 3D model of where I have assigned the reinforcement for the columns, beams, and slabs. As you can see here, let me zoom. This is the foundation, and these are the 20 dia bar, as you can see here, which are placed at 100 as you can see here, 100 distance. Let me zoom out so you can see our whole model. As you can see. Let me go to the ground floor. Let us use it wireframe so you can see the slab reinforcement layout. What type of bar I have used here. This box mentions it. Let me hide. No. Let us take a look at the column. Every column has a different type of reinforcement design. This is the 20 dia bar, and this is the 25 dia bar. Stirrups, which is 8 dia bar, which are placed at 100 distance. Now let's take a look at the cross section of the columns and beam. So you can see here are the beams. This is the beam cross section. As you can see here, this is the stirrups, 8 dia bar stirrups. Sorry. 20 side bars and bottom bars are 16 Every beam has a different type of layout of a rebar. As you can see here, this is the foundation footing, different footings. As you can see, vertical and horizontal footing is shown here. Now let me quickly go to the 3D model where we first came. It's a temporary height. From this 3D model, I have go to view, schedule, material takeoff. Here we can take up the material which we have used on the model family. You can directly measure the area and volume of the material which you have assigned properly. Hit OK. Here you can see every material which I have used and their area and volume. As you can see here, it suggests, you can see, walls, footings. From this, I have created the BOQ of the building.
This is the BOQ which I have created using the quantity takeoff of Revit. Every floor material quantity is mentioned below, their price and their quantity, their unit, or all of this mentioned here. Now, this is the labor cost of every activity. Which I have mentioned here. Duration of the labor which are the required for every activity is different, and I have assigned them according to their needs, their total cost, and multiplying this cost to the duration, we can get the total activity cost. लो ड्यूरेशन मीन्स कितने कम टाइम में वो एक्टिविटी खत्म हो सकती है, कम से कम टाइम वो लिया है, उसके हिसाब से लेबर हमने डिवाइड किए, उसके हिसाब से जो लेबर कॉस्ट आती है पर एक्टिविटी वो यहाँ पे असाइन किए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें टोटल एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन जो होती है वो मिल जाती है यहाँ पे। एज पर द हाई ड्यूरेशन मैक्सिमम वो एक्टिविटी खत्म होने में कितना टाइम लगे, उस तरह से हमने यहाँ पे ड्यूरेशन सारे असाइन किए हैं, आप देख सकते हैं। उस हिसाब से लेबर एंड देयर कॉस्ट, एंड by the multiplication we can get the total cost of the activity. Here the general rates of the labor and type of labor are mentioned. Now let us go to the comparison. Here is the duration comparison and the cost comparison of the uh, cost comparison of the project for labor cost. Here are some of the local risks which are going to affect the activities, not the whole project. Some of them defined here, the chance of happening in the percentage, which activity they are going to affect. From that, how much time and cost going to overrun is mentioned below for the local risk, and same is for the global risk. But here, global risk affects the whole project, not the any activity. हाँ, ये कह सकते हैं कि ग्लोबल रिस्क हर एक एक्टिविटी पे इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है, पर ओवरऑल प्रोजेक्ट पे क्या जो इम्पैक्ट है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है. So that was about local and global risk which are going to affect the project. But now let me take you to the MS project scheduling which I have created for this project. These are the general activities which I have mentioned, their duration, their predecessor, and their cost from the quantity which I have assigned here. Let me take you to the resource sheet. This is the resource sheet I have prepared for this project. It is based on the BOQ here, as you can see. All the price and the quantity I have mentioned here. It is used for the MS project. As you can see here, let me take you to the Gantt chart. These are the resources I have assigned here, and labor I have assigned separately using this Excel sheet I have prepared before. Here, all the site activity is mentioned here, and the labor cost, total labor cost of this activity are mentioned here, as you can see. This is the bar chart of the scheduling. As you can see, step by step activities are happening, and their predecessor, all things as mentioned here. So let me summarize what we have done until now. Firstly, we have prepared two model, architectural and structural model. From the model, we have taken quantity takeoff. From the quantity takeoff, we have completed the estimation part, which involves BOQ and labor cost calculation. From the BOQ itself, we have created a Microsoft project scheduling using the BOQ. As you can see here, this is the resource sheet we have prepared for the MSP scheduling. कोई भी प्रोजेक्ट अपने साथ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क लेके ही चलता है,
ऐसा नहीं होता कि प्लान किया है उसी टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। कोई भी अनसर्टेनिटी और रिस्क की वजह से प्रोजेक्ट में क्या टाइम ओवररन हो रहा है और क्या कॉस्ट ओवररन हो रहा है, वो जानने के लिए हमने यहाँ पे रिस्की प्रोजेक्ट का यूज किया है। So let me take you to the risky project software. So this is the uncertainty file. इसमें क्या किया है, यहाँ पे हमने जनरल ड्यूरेशन जो एमएसपी में डाली थी वही डाली, उसके तरह ही सीधा साइट एक्टिविटी देयर प्रेडेसेसर, जो रिसोर्स यहाँ पे असाइन है वो यहाँ पे दिख रहे हैं हर एक एक्टिविटी के। तो इसमें क्या किया है कि जो हमने एक्सेल शीट प्रिपेयर की थी यहाँ लो लो ड्यूरेशन की, मीडियम ड्यूरेशन की और हाई ड्यूरेशन की, तो वो ड्यूरेशन और उसके अनुसार जो लेबर कॉस्ट चेंज होते हैं वो हमने ये अनसर्टेनिटी वाली फाइल में इनपुट किए। ये लो ड्यूरेशन वाला कॉलम है, ये जनरल ड्यूरेशन वाला कॉलम है और ये हाई ड्यूरेशन वाला कॉलम है। लेट मी टेक द कॉस्ट एंड इनकम। ये यहाँ पे हमने क्या किए कि ये जनरल कॉस्ट है, जो लो ड्यूरेशन कम हो जाए कोई एक्टिविटी का तो उसके हिसाब से जो लेबर कॉस्ट में जो कमी आती है वो यहाँ पे हमने मेंशन किए। यहाँ पे जो हाई ड्यूरेशन के है एक्टिविटी के उसके वजह से जो कॉस्ट में चेंज आता है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी जाते हैं प्रोजेक्ट व्यू में, कैलकुलेट बटन दबा के हम जाएंगे सीधा प्रोजेक्ट समरी में। तो यहाँ पे लो जनरल एंड हाई ड्यूरेशन की वजह से जो प्रोजेक्ट में कॉस्ट में क्या चेंजेस आते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम इसी तरह हम जाते हैं लोकल रिस्क की फाइल पे। लोकल रिस्क में क्या होता है कि ये सारे लोकल रिस्क है। यहाँ पे जो जो एक्टिविटी दिख रही है आपको यहाँ पे उसी को लेके हमने यहाँ पे जाएंगे रजिस्टर रिस्क। यहाँ पे रिस्क के सारे रिस्क के नाम डाल दिए उसका। उसके बाद हम जाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप रिस्क। रिस्क को आप कोई भी एक्टिविटी में जाके ऐसे पुट कर सकते हो। आप देख सकते हैं टास्क है कॉलम अप टू बेसमेंट टू ग्राउंड फ्लोर, उसमें क्या है डिफेक्ट इन फॉर्मवर्क मटेरियल, तो उसके हिसाब से टाइम और कॉस्ट में क्या डिले और ओवररन हो सकता है उसको आप ये एक्सेल शीट में देख के यहाँ पे जो होगा वो हम डाल सकते हैं। उसकी वजह से कॉस्ट में क्या चेंजेस आएंगे उस तरह से हम यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करके उसका हमने रिजल्ट यहाँ पे लिया है। लोकल रिस्क की वजह से कॉस्ट और टाइम में क्या ओवररन हो रहा है ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक फैक्टर ये रखना है कि हमें टाइम सेम रखा है। हमने यहाँ पे सिर्फ लोकल रिस्क की वजह से कॉस्ट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है वही हमने देखा है। इसी तरह हम ग्लोबल रिस्क में जाएंगे। ग्लोबल रिस्क क्या होता है कि सीधा यहाँ पे रिस्क रजिस्टर किए हमने। अभी सभी रिस्क को हम टाइटल पे डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारे एक्टिविटी पे वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। अभी ग्लोबल रिस्क हर एक एक्टिविटी पे अलग अलग तरह से असर करता है, उसके हिसाब से हमने ये परसेंटेज यहाँ पे दिखाया है। तो हर एक एक्टिविटी पे वो अलग अलग तरह से असर करता है, पर एंटायर प्रोजेक्ट पे क्या असर दिखाता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सारी एक्टिविटी में अलग अलग जो असर होता है वो हमने यहाँ पे परसेंटेज वाइज हमने मेंशन किया है। तो उसके हिसाब से जाएंगे हम कैलकुलेट, उसमें से क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है हम यहाँ देख सकते हैं। ग्लोबल रिस्क की वजह से कॉस्ट में क्या ओवररन हो रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह हम जाएंगे लोकल प्लस ग्लोबल रिस्क। यहाँ पे हमने लोकल और ग्लोबल दोनों रिस्क को इन्वॉल्व किया है इसमें। रिस्क को यहाँ पे रजिस्टर किया सारे रिस्क को, उसको रिस्क ड्रैग एंड ड्रॉप में जाके हम लोकल रिस्क को एक्टिविटी वाइज और ग्लोबल रिस्क को हम डायरेक्टली टाइटल पे डाल के ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं। उसके हिसाब से क्या रिलेटिव डिले हो रहा है, क्या कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, उसका हमने परसेंटेज हमने एक्सेल शीट में जाके देख सकते हैं। ये सारे डाल दिए। लेट मी calculate the result and summary।
एज यू कैन सी लोकल और ग्लोबल रिस्क दोनों की एक साथ में क्या असर हमें प्रोजेक्ट पे दिखते हैं कॉस्ट में, वो हम यहाँ पे रिजल्ट में देख सकते हैं सारा। अभी हमने अनसर्टेनिटी, लोकल रिस्क प्लस ग्लोबल रिस्क, यहाँ पे हमने क्या है कि लो ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और हाई ड्यूरेशन की है। अभी लोकल और ग्लोबल में क्या था कि हमने वहाँ पे ड्यूरेशन चेंज नहीं किए थे, वो जो जनरल ड्यूरेशन थे वही सारे लो में भी, मीडियम और हाई सभी में जनरल ड्यूरेशन ही डाला था। यहाँ पे हमने क्या किया है, अनसर्टेनिटी लोकल प्लस ग्लोबल रिस्क, इसमें हमने ये किया है कि टाइम ड्यूरेशन भी बदला है हमने, लोकल, अरे लो ड्यूरेशन, जनरल ड्यूरेशन, हाई ड्यूरेशन, उसके साथ साथ हमने लोकल रिस्क प्लस ग्लोबल रिस्क सब कुछ असाइन किया है, और सभी चीज़ों को फैक्टर करते हुए इसमें हमें क्या मिलता है रिजल्ट, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके ये देख सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी लोकल प्लस ग्लोबल रिस्क की वजह से हमें प्रोजेक्ट पे क्या क्या असर दिखते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था पूरा मेरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट। Lastly, I would like to thank you, my faculty mentor, Dr. Shobhit Chaturvedi, my industrial mentor, Mr. Divyaraj Vagela, and the Parshwa Build Co. Thank you.